Well, not a lot has changed since we last tipped you guys. Unfortunately, rain kharab kar diya pure play ko, and we had nothing, no action to look forward to. The only action that we had was coming and going off the players on and off the pitch. फिर inspection चला 9 बजे चला 9:30 बजे चला, but कुछ मिला नहीं उसका. First of all, मतलब yeah, upsetting finish to your experience in the ground from Palakkale. Uh, I know you got to see one innings. That was a good enough innings to see between Hardik Pandya, Ishan Kishan. लेकिन पूरा मैच देखने का मजा अलग रहता था यार. बिल्कुल बिल्कुल मैं वही सोच रहा था कि लंबा मैच है मगर मजा तो आएगा. एंड आपसे जब मैं लास्ट जुड़ा था जब बारिश रुक गई थी, इफ यू रिमेम्बर, एंड आधा घंटा मैं बोला आधा घंटा में प्ले स्टार्ट होने वाला है. एंड मैं ऊपर गया, सब सेटअप करा एंड एकदम से इंडियन प्लेयर्स केम आउट, दे वर वार्मिंग अप. आई एम लाइक गेम इज गोइंग टू स्टार्ट. लेकिन एकदम से फिर बारिश आ गई, कवर्स केम ऑन, फिर कवर्स आते गए पहले पिच को कवर करे, फिर आउटफील्ड को, इनर सर्कल को, फिर पूरा ग्राउंड कवर हो गया. उसके बाद फिर मैच खत्म. काफी सारे फैंस डिसअपॉइंटेड. आप देखो गाड़ियां भी अभी जा रहे हैं सब एक के बाद एक. तो yeah, everybody is disappointed we didn't get to see a result. We saw some cricket, but you always want to see a result in these kind of encounters. 100% यार, like everybody, मैं भी यार, I was looking forward to seeing good bowling from Jasprit Bumrah. अभी तक मालूम नहीं बंदा फिट है या नहीं है. I know he was looking very good batting के तरफ से, लेकिन कंडीशन बैगन में मिला दे यार. इतनी अफसोस रहा. मैं भी चला रहा हूँ यार गाड़ी लेके अभी. बट या आई मीन जो भी होता, आई मीन अच्छे के लिए होता. बोल सकते हैं भाई अगर बीच में फिर डकवर्थ लुइस आके बैगन में मिला सकता था अपने को. So I guess I would take that point and go into play Nepal if that's rationally जो मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं नेपाल के अगेंस्ट अब जा रहा हूँ. अब ये मैच में थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन था. डकवर्थ लुइस, बारिश, ये सेफर ऑप्शन है. आई थिंक for India at least I would say the safer option considering the total and what was to come in terms of the rain. Do you agree with that, or do you think you say okay, bhai, play out the match? I know ideally play out the match from a fan perspective, from the logical perspective, I would say take this point and move on to Nepal. No, play out the match because it doesn't, regardless you have to beat Nepal. अगर आपको point मिला नहीं मिला, आपको नेपाल को मारना है either way, because to qualify, unless the next round, right? Yeah, top two qualify. So it didn't really matter. I would have just seen the match. We would have understood Jasprit Bumrah's run up, his energy. We would have understood Shardul Thakur's role in the team. We would have understood Jadeja and Kuldeep's effectiveness and all that. We missed out on. So there's a lot we missed out on. But you know, hey, this is cricket. At least we got to see a game. We thought, you know, कि पूरा दिन बारिश होने वाला है. उसके बाद यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. और बहुत हल्की अभी भी हो रही बारिश. बट यू कांट टेल, राइट? ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं बारिश में खड़ा हूँ, बट हो रही है, हल्का हल्का ड्रिजल है. For me though, from India's point of view, अगर मैं positives देखा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या बहुत बड़े positives है. because हम कितने बार देखें जब top 4 नहीं चलते इंडिया के in the last 10 years, middle order भी fail हो जाता. You know, हम लोग बोल रहे थे युवराज धोनी का replacement नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं है. So we saw a good counter attack and it wasn't like fully attacking. It was very calm and composed. मच्योर, दोनों बहुत ज्यादा मच्योर थे. तो मजा आया देख के. वो पॉजिटिव्स था. पाकिस्तान से पॉजिटिव्स ये थे, शाहीन अफरीदी भाई, क्या बॉलिंग था, इनक्रेडिबल. ही इज अ सुपर हीरो, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. एंड अगर आप नेगेटिव्स देखें तो फिर रोहित शर्मा का डिसमिसल अंदर वाली बॉल पे, यू नो, विराट कोहली डिसमिसल, रिपीट. और हर बंदे का आप देखो सिमिलर, उनका जो वीकनेस है वहीं पे लगा रहे हैं उन लोग. एंड लुक, यू कैन से इट्स अ गुड डिलीवरी, बट यू नो, आई वाज टॉकिंग टू रोहित जुगलान earlier and he also said the same thing कि you're also a good batsman, so sometimes you need to fend out those deliveries, or you know, you come up with a solution. So those were the kind of negatives. Shubman Gill, we talked about this earlier कि भाई जब when the going gets tough we need him to lock down and score some runs as well. So that was a bit negative, the top order. And then the tail, but the tail was more expected than anything, but the top order was a bit of a negative. But overall I think it was a fantastic first half of cricket and we missed out on not having a result. जो भी हमारे साथ जुड़े, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए. मुस्तफा पालेकले में अगर आपको कुछ सवाल पूछना है श्रीलंका के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में, सब कुछ मुस्तफा मैच के अलावा भी सब देखते रहते हैं. क्या बात है. यहाँ पे गिल्स भाई, जब गिल्स हॉट डॉग बर्गर लेके चले आ रहे हैं उन्होंने. It was a 60-40 in favor of Pakistan after the first innings, and completely I think those odds are also a bit of problem in Pakistani captaincy बोल सकते हैं. जिस तरीके के spinners हम लोग mention कर रहे थे, Pakistan could have actually crushed India if they wanted to, but there was a little bit of a spell where the spinners came into play. Life would have been more tougher if Shaheen and Haris or Naseem, one of them would have come back into the attack. At least Shaheen or Naseem.
And that's what you get in the competitive game too. अगर आप देखें दोनों teams both evenly matched है, and you're going to get these punches and counter punches. Pakistan were on top, they were smashing it with the ball early on. Then India came back with Hardik and Ishan, and then Pakistan fought back. And so we're going to get a contest. These two sides are similar to each other now in the last couple of years compared to before, and you're going to get these kind of thing. Yes, you will have to criticize at times Babar's captaincy. You would, especially when the spinners were on. Lekin, it's a quality contest. That's what makes a quality contest. Mistakes, pressure, bad decisions, rash shots, poor bowling. It makes it a more exciting contest between the two teams, and this is expected. This is going to happen from both teams, and hopefully, if India beat Nepal on Monday, we're going to see next week. I hope in Colombo there's no. मेरे को अभी मैं वही सोच रहा था, डर हो रहा था हांगकांग के मैच ऐसे जैसे छोटी टीम आके कुछ तो भी उंगली करके चले जाते यूजुअली अपने को. सो आई एम गोना प्रे अ लॉट फॉर दैट नेपाल मैच ब्रो. लाइक आई एम नॉट गोना टेक इट लाइटली बिकॉज़ ऑनेस्टली नेपाल की जो टीम है मैं काफी पॉजिटिव्स भी देखा वो टीम में. हार्ड इफ यू लूज दैट गेम फर्स्ट, फील्डिंग अच्छी टीम है, फील्डिंग अच्छी है उस टीम की. काफी स्पिरिटेड बच्चे हैं. तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क मैन. बिल्कुल आप इजी नहीं ले सकते, लेकिन मगर अगर आप वो गेम हार नहीं बोलो. सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? हमारे व्यूअर्स को बोल रहा था, अगर कोई नेटवर्क का इशू है आप रुको मत लो, टेंशन ना करो. जस्ट बिकॉज़ ऑफ द नेटवर्क मुस्तफा इज हैविंग दैट द ग्राउंड राइट नाउ, तो वो होने वाला है. तो बेयर विद अस. अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? सॉरी, कैन यू रिमाइंड मी? नेपाल के बारे में बोल रहा था. हाँ नहीं, नेपाल को लाइट नहीं ले सकते ऑफ कोर्स 100%, मगर अगर वो गेम हार गए तो वर्ल्ड कप भी भूल जाओ भाई. क्या करना है, यू हैव टू विन दिस गेम. देयर इज नो बाय हुक और बाय क्रुक. नहीं बिल्कुल, हुक क्रुक और थॉमस ब्रुक जो भी है मसला. आई थिंक विराट कोहली, आई एम एक्सपेक्टिंग 100 इन नेपाल. ये लिख के रख लो, विराट कोहली विल गेट हिज 100 and 103 व्हाटएवर ही हैज टू मेक 30,000 रन. ये मैं लिख के दे सकता हूं अभी. आई डोंट नो व्हाई, मेरे को बहुत पॉजिटिव बिकॉज़ आज जो कवर ड्राइव था उससे मेरे को लग गया भाई फॉर्म में है. बस आज उनका जो इनसाइड एज लगा बहुत अनलकी था. He was roaring to go. वही वो दैट टाइप ऑफ गेम फेस्ट इज लाइक, अब नेपाल के अगेंस्ट मार दिया तो भी क्या बोलेंगे भाई, नेपाल था और कुछ नहीं था ये वो. सो इट्स अ गेम आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द वे एंड गो बैक टू कोलंबो एंड प्ले दोस सुपर फोर्स, प्ले पाकिस्तान, प्ले बांग्लादेश, श्रीलंका, whoever comes from the other group, play them and be competitive. Because this is where you need to compete. Going into the World Cup, the big games are the ones where you have to perform. Today we saw a couple of big performances from two players, but overall we don't know what's going to happen. We're still in the unknown. Yeah, मैं तो ये दुआ कर रहा हूं ईशान किशन continues his form because bro he looks more of a good complete player right now. He's the most consistent keeper that has been in this team right now. I know संजू भी रुका हुआ है, उसकी भी अपॉर्चुनिटी आएगी, बट लाइक अगर केएल राहुल को आप बाहर से लेके आओगे सेकंड हाफ में वो बहुत अनफेयर हो जाएगा. अब और मुश्किल दिख रहा है बिकॉज़ केएल राहुल का वापस आना. बिकॉज़ ईशान अगर ऐसा बैटिंग कंटिन्यू करते गया देन आई डोंट सी केएल राहुल कमिंग बैक unless Shreyas Iyer face predominantly and then he come back. Ishan Kishan की growth भी, and you saw the decision making today. He was very mature. He understood कब attack करना है, कब single double लेना है. That was what I saw today, and of course, like it's just one innings, but like you said, it's against Pakistan. It's against a great attack in a pressure situation when the opposition is on top. Like there is no doubt about it. The pressure is fully on. To an innings like that was pretty special, and hopefully he continues to get back. Now I don't see him getting dropped. It'll be very unfair on him if he gets benched from this situation because he's scoring consistent runs now, and that's a good news for India. They have a fit wicket keeper who's scoring runs in the middle order. I mean, we've seen stranger things happen in India. I mean, even Kuldeep Bhai was in form who got dropped, so we never know with this Indian team क्या हो सकता क्या नहीं. बिल्कुल. But regardless, I mean, आज की परफॉर्मेंस अगर मैं ईशान और हार्दिक की बात करूँ यार, वो जितनी भी बात करें कम है. आई थिंक बहुत लोग कॉल आउट करे थे. आई थिंक अपन काफी जल्दी समझ गए थे कि व्हाट काइंड ऑफ अ टेम्पलेट हार्दिक पांड्या वाज गोइंग इनटू. जिस तरीके से वो डिफेंसिव अप्रोच में भी घुस जा रहे थे, व्हिच आई लाइक बिकॉज़ सिचुएशन के हिसाब से वैसे और प्लेयर को सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा. ही कांट बी एन एग्रेसिव गाय. So the aggressive guy would either be Surya Kumar or Ishan Kishan, but again the way they read the situation, I am one of those people who likes situational innings rather than coming and having that 1 out of 10 aggressive explosive innings, कि आके मार के फोड़ दिया, वो बहुत रेयर होता. The only thing I will say in that, one thing he has to improve is rotation of strike early on, because क्या होता फिर pressure build up होता opposition पे. The thing is Rohit was hitting a few boundaries here and there. Kishan was also hitting, so India's run rate was okay, so it didn't really affect in this situation. But in general, if he's going to come in whatever situation, thoda sa he needs to, not the strike rate, rotation of strike. Like don't consume that many dot deliveries, especially because not for him. I know he can catch up, but it will cause pressure on the opposite batter, matlab non-striker pe.
बिल्कुल बिल्कुल। अब शुभमन गिल की बात करो, आई मीन ही हैज बीन वन ऑफ दोज इन फॉर्म, बट टुडे ही कंज्यूम्ड 32 deliveries and got like what 10 runs if I'm not wrong. Uh, Hmm. what do you think that was? Was it just because of the pitch, or do you think the occasion got to him? What was the problem that he was facing? You could say so. Like पहली बार उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा, pressure तो था उस पे. The other thing is the pitch. Again, he's never played this bowling attack. He's heard about it, he's read about it, he's watched it, but he's never played it. So it's a different challenge altogether. It's a different kettle of fish when you're playing Shaheen, Harrison, Naseem Shah. तो मेरे हिसाब से that was one thing from Shubman Gill's point of view. But he has to improve. He has to look to score runs even in tough situations, like Ishan Kishan did today, right? You expect that from Shubman Gill, who's a bit more flamboyant. He has, you would say, more talent, or he scored so many runs in the IPL. You expect more that from him as well. If Ishan Kishan can do, Shubman Gill can, and I For expect me, him. Ki bhai, For me, the difference in Ishan Kishan and Shubman Gill today was intent. I think you could have seen it in Ishan Kishan that he was ready to prove a point. He was ready to cement his position. I think kahin na kahin Shubman Gill lacked intent. When I say intent, don't get me wrong. I just mean that थोड़ा बहुत डरा हुआ सहमा हुआ था. Whereas you say Ishan Kishan, he rose to the occasion. He was मतलब like, फैज सिचुएशन भी अलग थी, राइट? इन न्यू बॉल खेल रहा था, शाहीन फुल स्टीम पे आ रहा था. ये सिचुएशन अलग थी, लाइक थोड़ी बहुत. एंड it was the start of the innings. He could afford to take his time, and आपका कप्तान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि we're going to look to take our time, थोड़ा अप्रोच अलग रहेगा. So if that is the instructions that he's got, I don't think the approach you can really criticize. It's just about in difficult situations, trying to get out of difficult situations. What Ishan Kishan did, he was rotating the strike. Intent, yes, like I understand because of the delivery, you're saying he didn't have intent, but I think he still intended to score runs. It's just that no, he was not able to. no. That's one thing. Intent, not in terms of like intent. That way, I'm just saying his temperament of coming towards the match. You know how you come into the match. You either come in a confident way or you come in a predetermined way. कि भाई ऐसा ऐसा खेलूंगा, ऐसा था. Ball अगर move हुई तो हैबत हो जाता. Ishan Kishan didn't look at anything else, but he just said that today I'm here to score. I'm here to make runs and make a position out of myself. You could see that with Yes. every shot. देखो 15 ओवर में आ गया था ईशान किशन. ऐसा नहीं था कि वो 30th ओवर में आया. 15 ओवर में आया. He batted till the 38th over. He had more or less, चलो ठीक है, न्यू बॉल थोड़ा ओल्ड हुआ होगा, but there was still movement on offer. There was still like and he played spinners as well. Foot movement अच्छा कर रखा. तो मैं वही बोल रहा था, when I say intent, I mean the way he showed himself, how he showed up for the game. It was very different than Shubman Gill and Ishan Kishan. Yeah, I mean, you could say so. Like that's your observation. I think that is correct. I can't argue with that. That is correct, sir. नहीं भाई, आप कर सकते हैं आर्ग्यू, वैसा कुछ भी नहीं है. नहीं लेकिन नहीं, उसमें कोई आप कुछ गलत नहीं बोल रहे. गलत तो मैं बोल देता हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है. आप जो बोल रहे थे सही है उसमें. मीडिया आपके बॉक्स में आप हिसाब बैठे से थे, कैसा था माहौल वहाँ का? कौन कौन क्या क्या बोल रहे थे? जर्नलिस्ट में क्या बातचीत चल रही थी? What was the shouting happening? के भाई were they happy, were they sad? जब उसके 4 विकेट गए थे, राइट, 2 पाकिस्तानी सहाफी आके बोले भाई 200 भी मुश्किल है. मैं बोला आपको 200 मुश्किल है. एक फिर दूसरा बंदा बोल रहा है 200 छोड़ो, 150 तक भी नहीं पहुंचते. फिर जब 150 पहुंचे, मैं ढूंढे गया उन लोगों को, जाके खा रहे आराम से. मैं बोला क्या नहीं नहीं, हम खा रहे, डिस्टर्ब मत करो, बाद में बात करेंगे बोल के. फिर तो ये नोक झोंक तो चलते रहता, बट माहौल तो अच्छा था. एवरीवन वाज एंजॉयिंग द गेम, फोकस्ड ऑन द मैच. ऑफ कोर्स बीच में खाना पीना भी चल रहा था in between whenever there was breaks, but over here everybody is working. Either they're typing or they're doing their shows, mid innings and stuff. It's the TV people are are busy during more busy during the breaks, whereas the written articles, they're more busy during the game itself. So that's the difference. But like both Zabardast Mahole, I'm learning a lot, meeting people, different perspectives on how you look at the game. I asked Nikhil Naz, who works for India today. I met him today, so I was asking him his favorite, moments to cover and stuff. Of course, he talked about the World Cups that India won and everything. But one match which was very interesting was Johannesburg first Test match, India South Africa 2006. जो श्रीशांत छक्का मारा था, याद है? And so it's crazy, like how these kind of specific moments, even journalists and people remember, even though that it's not something that won you a World Cup or anything like that. But yeah. Some nice moments. It's just something के भाई out of the ordinary दिखता ना. Like I think वो सा जब शीशान नाच के आता and stuff like that, you won't see that on an everyday thing. So वैसे moment तो हमेशा आपको याद रहते हैं. But
I mean, most happy must be Sri Lankan fans. Like you met a couple of Sri Lankan fans. Ulna to Yeah, pure I made a few in the last one. neutral person. उन लोग तो party कर रहे थे वहाँ पे. They are excited and they love the cricket, man. They love watching cricket. Of course, they're supporting Sri Lanka, but India Pakistan के मैच में भी आके India की भी जर्सी पहन ले रहे, बाज पाकिस्तान की भी पहन ले रहे, बाज श्रीलंका की भी पहन ले रहे. They're very excited that the Asia Cup is here and a good crowd coming in. I didn't expect that many people, but it was a very good crowd and people flew in, like I told you, from India and Pakistan yesterday, today morning. Hotel में भी मैं देखा एकदम से like there was 20-30 Pakistan fans all dressed in jerseys. Suddenly, like, they came, landed in the morning. So yeah, the atmosphere is very good. Hopefully we get to see something similar, or if not better, in Colombo. Yeah, of course. And again, see, I'm not going to take Nepal lightly because थोड़े बहुत positive जो मैं मुल्तान में देखा नेपाल के बारे में, energetic team है, young team है, they're good in the fielding, they're good bowling भी बहुत अच्छी है उन लोगों की. If you looked at it till the 37th over, Pakistan was like what 200, and then obviously Iftikhar and Babar they started hitting. But if Nepal get to a good start and then India again crumble under pressure, you never know. कुछ भी हो सकता है ऐसे मैच में because Nepal ultimately have nothing to lose. But India has a lot more to lose, and then with the World Cup team getting announced tomorrow, there's going to be a lot more drama, which India will be having to handle. Ooh, it's getting announced tomorrow, huh? Yeah, 3rd September was what the date was given. अच्छा. But again, एक और ये है कि भाई 1 week before the World Cup, you still can make whatever changes you want. So it won't be a fixated World Cup squad, but आपको announce तो करना पड़ेगा. World Cup के start के एक हफ्ता पहले आप अपनी टीम चेंज कर सकते हैं. तो कल हमारा डे ऑफ नहीं है, ये भी रहेगा. Like there's going to be a lot of talk and chatter. There's going to be. कल बांग्लादेश अफगानिस्तान भी भाई का डे ऑफ. कल वो बांग्लादेश तो दूसरे देश में. अब कहाँ जाऊँ मैं पाकिस्तान वाले. कवर तो करना पड़ेगा भाई, कवर तो करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, कल श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच है. कल श्रीलंका नहीं बांग्लादेश अफगानिस्तान. बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच है. ओके. So हाँ, तो उसका भी बात कर लेंगे. That will be good. For me, Faiz, I'll just tell you quickly the top moments. One was Rohit Sharma's flick. That was incredible. मैं समझा ये बंदा WTC में जो मारा था, देखो वैसे ही जगह मिला आज तो यार. हाँ, शाहीन का बोल्ट दूसरा I mean जो रोहित शर्मा का था, उसका हार्दिक पांड्या का स्लैप पिक और एक ईशान किशन जो शॉट मारा, ये मेरे टॉप मोमेंट्स थे आज. जबरदस्त था देखने. Who was the top player for you then? One guy you can pick. From both teams, like one guy from the whole match. From the whole match. Shaheen Shah Afridi, bro. Shaheen Shah Afridi, the man. Yeah. Bro, he's incredible to watch, भाई. Like आपको कुछ डिस्कस करना है भाई, थ्रो करो हमारे ऊपर, हम भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक बांटेंगे. बिकॉज यहाँ पे मुसा भाई पहले कल में चिल कर रहे हैं, उनको भी अभी ट्रैफिक अटका हुआ रखा है. तो या you were saying, sorry. नहीं, मैं बोल रहा था कि ईशान किशन I really enjoyed, but Shaheen Afridi, bro, this guy is incredible. He's so good. You have to come watch him one day. Hopefully, you will get the chance very soon. Next month, you will probably see him in your home city. Bro, what a bowler, man! He's incredible. लाइन लेंथ जो पकड़ता है उन्हें, और मेरे को क्या इम्प्रेस करा मालूम, आज उन्हें ओल्ड बॉल के साथ भी he got the ball to talk. He made it uncomfortable for set batters. हार्दिक और उन्हें कौन था, ईशान Jadeja, they're all set batters. He bowled so well. So I was very, very impressed with Mr. Shaheen Shah Afridi. What about Mr. Naseem Shah? Because Naseem Shah was getting it to move as well, and late movement rather. Like उसका और थोड़ा late होता move rather than Shaheen जो upfront दिख के आ जाता. But yeah, he also has a good variation in slower delivery. So how would you find Naseem Shah bowling? Yeah, I mean, Naseem Shah, I'm always impressed. He's a genuine fast bowler. He has the pace, very exciting to watch. But I keep Shaheen like on another level just because of the control that he has, and he's just very high quality. But Naseem Shah is also an upcoming bowler, very exciting to watch. Live भी ball उसका कभी दिखता नहीं यार, मगर बहुत मजा आता. There was one full toss, I think it was Ishan who missed or someone missed. उसको खुद नजर नहीं आया बॉल, तो it was an over pitch delivery, I remember, in today's game. So he was, I think, even Haris Rauf, bro, उन्हें जो टप्पे पे डालता बीच पिच पे, incredible. पूरे अच्छे बॉलर हैं वो तो, फास्ट बॉलर्स. हारिस रॉफ की थोड़ी बात करेंगे. इनिशियली ही लुक डेंजरस, बट फिर कहीं ना कहीं मिडिल ओवर में थोड़ा पिट गया था उन्हें. ही अगेन लीक्ड अ फ्यू रन्स. उसका यही है राइट, बिकॉज उन्हें वेरिएशंस उतना नहीं करता राइट फेस्ट, तो जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता थोड़ा उसको रीड करने इजी हो जाता. लेकिन T20 इज डिफरेंट, 4 ओवर है,
उन्हें निकाल लेता 4 ओवर। यहाँ पे 10 ओवर में द लास्ट 3-4 overs he does struggle because if you see he has a slower ball and stuff, but it's not as effective. It doesn't have the cutters like even Naseem has a very good slower ball. He doesn't have that variation, so that's why उसको pick करने थोड़ा easy हो जाता. Even आपको याद है अफगानिस्तान के against एक दो मैच में उन्हें पिट गया था. He was expensive, तो उसका यही मसला है. सतीश भाई बोल रहे हैं, सतीश भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सिंह, ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, कुलदीप, सिराज, दिस शुड बी द टीम अकॉर्डिंग टू हिम. नहीं अभी यही टीम रखो भाई, जो आज टीम के कितना चेंज करते रहते. बेचारा टिक गया एक मिडिल ऑर्डर में बच्चा, उसको खेलने दो वहां पे. अब ज्यादा कंफ्यूज नको करो. आई अब थिंक फिर से उसको ओपनिंग कराएंगे वो. आई थिंक अनॉयड है शुभमन गिल के परफॉर्मेंस से. तो ही से शुभमन गिल putting Ishan Kishan on the top and then he gives try for Shardul. He's acting like you can't be that impatient bro. थोड़ा सा सब्र रखो youngsters के साथ. Like it's okay. It's okay. अभी क्या would you change this 11? I don't think you would either. And like you're a very impatient man and you also wouldn't change it. So yeah, I disagree. I wouldn't actually because देखो अभी तो you don't even know what this 11 is capable of doing. There's no place that they've all played together. Even West Indies में आपको कोई मौका नहीं मिला विराट और रोहित को देखने का. तो ये अभी के लिए तो रखना पड़ेगा. But what I would like to see is more batting again from the top. And अब जो supposedly इतना एक महीना टेल के बारे में बात करें, the tail also will have to now step up because they're also feeling the pressure now. 100%. अब देखो शार्दुल ठाकुर को खिला रहे और दूसरे बॉलरों को बिठा रहे because of you need strength and depth in the batting, but if he's not going to contribute with the vital runs down the order, then you're going to have an issue, right? You're going to have an issue. So like सतीश भाई का रीजन of having शुभमन गिल the boot is Gill is like KL राहुल की तरह डर के खेल रहा है. बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ. थोड़ा बहुत अगर कंडीशंस चेंज होते हैं, यूजुअली हम शुभमन गिल को देखते हैं कि वो डर के खेलता है, सेम के खेलता है. बट अगेन इट्स द डिफरेंस बिटवीन अगेन थोड़ा वक्त के साथ आएगा. यंग है बच्चा, ही नीड्स टू बी मोर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट कंडीशंस. आई थिंक थोड़ी दूसरी जगह, दिस इज वेयर इंडिया नीड टू लेट अदर प्लेयर्स गो एंड प्ले इन डिफरेंट लीग्स. काउंटी खेलेगा, मे बी ही लर्न ऑफ वन थिंग और टू. बट अगेन थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा. शुभमन बहुत यंग है अभी, तो ही कांट सोक अप एवरीथिंग. और वर्ल्ड कप में तो बहुत क्रूशियल है बिकॉज इंडिया का बेस्ट प्लेयर होगा. इंडिया के पिचेस पे तो ही प्रॉब्ली वन ऑफ इंडियाज बेस्ट प्लेयर राइट नाउ. हाँ बिल्कुल. अभी तो एक ही गेम है अगेंस्ट पाकिस्तान that he's failed right now, तो let's see, give him some time. अभी तो I wouldn't change. डैडी माइक बोले क्या करवा दिया भाई, पॉसिबल थ्रिलर था, बारिश हो गई भाई. बिल्कुल पॉसिबल थ्रिलर था, प्रोबेबल थ्रिलर था. इट वाज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम एंड आई वाज एंटिसिपेटिंग इट. माहौल पूरा सेट हो गया था यहाँ पे एंड इट्स जस्ट मौसम साथ नहीं दिया. बहुत हल्की सी बारिश थी मगर इट वाज इनफ टू डिसरप्ट प्ले. क्या कर सकते भाई, बात चीजें हमारे कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते. एंड या इट्स अ लॉस नॉट ओनली फॉर us, it's a loss for the fans, it's the loss for the broadcast. Everybody has lost out, and the players themselves, I'm sure they wanted a result. They will be upset that they couldn't complete the game. But it's not in our hands, so we can't worry about these things. Yeah, 100%. I mean, everybody was just anxious to get the result. But again, देखो भाई, there are more possibilities of having India Pakistan again in this tournament, a final, and even in the next stages, the Super Bowl, whatever it is. So there is possibility of India Pakistan and all. World Cup में अहमदाबाद में तो है ही October 14 को तो है अभी. This is probably a teaser, then you got a trailer, then you got the movie. So you can सतीश भाई से अगर स्काई नीचे होता तो स्कोर और ज्यादा होता. I mean again questionable है सतीश भाई because स्काई के रन नहीं आए 50 ओवर फॉर्मेट में. अब प्रॉबेबली अगर उसका दिन चलता, बट अगेन मूवमेंट थी पिच पे. शाइन और नसीम खारे भी सकते थे उसको. यू नेवर नो, उसका कोई गारंटी नहीं है. टॉप एज अगर हो जाता है, समथिंग इज पॉसिबल, लाइक गोइंग अक्रॉस द लाइन एंड स्टफ लाइक दैट. यू नेवर नो. आई मीन अगेन स्काई इज जस्ट अ bet where that's where शुभमन के सॉरी ईशान किशन, दैट्स व्हाई और ज्यादा उसको कमेंट करना कि जिस तरीके से वो टॉप ऑर्डर पे खेलते गया और अब मिडिल ऑर्डर में आके इसने परफॉर्म करी, तो दैट इज व्हाट वर्सेटिलिटी बता रहा है वो. Yeah, 100%. I completely agree. Look, with Surya Kumar Yadav, I love him as a player. He's incredible. मगर वही है कि जब opportunities मिले, he didn't get that. He didn't score with that consistency. So let's see what happens. मगर अभी शुभमन गिल को तो ऊपर खिलाना है. मेरे हिसाब से I wouldn't change anything. स्काई को नीचे, जैसा आप बोले, कोई गारंटी नहीं है उन्हें रन्स मारेगा नहीं मारेगा. We've seen him play some loose shots too. So there's no guarantee in that. Yeah, 100%. अब वही है भाई, अभी बोल भी नहीं सकते विनिंग कॉम्बिनेशन, बट अभी जो इनिशियल 11 आप सेट करे वही चलाओ एटलीस्ट नेपाल. एंड नेपाल को तो आप मार दोगे प्रॉब्ली टू अ मैच वेयर यू फील कि हाँ भाई असेस कर सकते हैं अपन कि भाई इन्हें अच्छा नहीं खेल रहा, इन्हें अच्छा खेल रहा.
and keep away whatever KL Rahul or anyone is coming. अभी उसको बाहर ही रखना पड़ेगा. I don't think it will be fair to get any KL Rahul or anyone in the squad right now, because this 11 is probably going to play most of your matches, is what I feel. Unless Shardul next year or whoever is going to be rotated, that is a different thing, or Prasid Krishna, whoever. But that is fine. Bowling wise, I don't mind. But it's just मगर very अब बात अय्यर पे भी आ सकती, अगर उन्हें ऐसा आउट होते रहा शॉर्ट बॉल पे, बात उस पे भी आ सकती. देन यू माइट हैव चेंजेस, यू माइट हैव इश्यूज, बट yeah, for the next few games you have to play this 11 because I mean it's not, we don't know what the result would have been. It was a competitive score, so मेरे हिसाब से it's okay. नहीं बिल्कुल यार, आई थिंक इट्स ओके फॉर नाउ. बट या स्काई इतने दिनों से खेल रहा था, तो उसे हटाकर अय्यर को खिलाना जो चोट से वापस आया था. बिल्कुल भाई सतीश भाई, मैं तो ये एग्री करता हूँ. मुस्तफा भाई भी सेकंड करते, बट अगेन वही है ना कि भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो, रोहित शर्मा बोले कि भाई 2 साल के दायरे से हम लोग देख रहे कि भाई केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं. एंड अगेन सूर्य कुमार अगर परफॉर्म कर लेता ये 4-5 मैचों में, तो वो सीमेंट कर लेता था. So Sky hasn't helped himself as well, but again I know where you're coming from कि भाई अय्यर इंजरी से कैसा डायरेक्ट आता, जबकि सूर्य कुमार डायरेक्ट खेल रहा. फिर तो आप संजू की भी बात कर सकते हैं कि भाई संजू जो खेला वेस्ट इंडीज में, फ्रेश खेला, उसको भी नहीं लिया, उसको तो रिजर्व में लेके तिलक वर्मा को लिया उसके ऊपर. तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट रिगार्ड. बिल्कुल. लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी है, चलो ठीक है. श्रेयस के होल्ड द फोर्ट. स्काई का अगेन ही इज दैट एग्रेसिव काइंड ऑफ प्लेयर. हाँ, अगर उसको सिचुएशन चेंज करके खेलो, बोले सिचुएशन के हिसाब से खेलो, आई डोंट थिंक वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा. Yeah, no, 100%. अब देखो, मैं समझ सकता हूँ सतीश भाई क्या बोल रहे हैं, बिकॉज उसका श्रेयस फिट नहीं था एंड एवरीथिंग, मगर अब he is now fully fit and he was in the middle order before he got injured, so there was no reason for him to be dropped, right? Before he was in the 11, so now he's fully fit, he gets his place back, and nobody really broke down walls to cement that position. Yes, Ishan Kishan has shown consistency now, but he's also in the team. It's not really affecting it. So I think it's a okay decision. Mere hisab se. I said it was 50-50. Can't say who benefited from this 100%. You can't say because you never know what. It was 100% spot on, 50-50, man. But baaz log वहाँ पूरे 60-40 in Pakistan's favor. Some people said something else, but in my opinion, it was a 50-50 game. Yes, वो डकवर्थ लुइस के हिसाब से जो odds आ गए थे ना, स्कोर के like 230, 155, 180 ऐसा, अगर वो ऐसा टारगेट रहा तो मेंटली आप और ईज हो जाते हो. बट आई थिंक बेनिफिट का अगर अपन बात करें, आई मीन दोनों को इक्वली हो गया, बिकॉज पाकिस्तान क्वालिफाई हो गया नेक्स्ट स्टेज को, इंडिया को एक पॉइंट मिल गया. नाउ दे जस्ट हैव टू बीट नेपाल टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेज, वेयर अगेन इंडिया पाकिस्तान विल मीट, राइट? सो आई थिंक वैसे हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं तो इट इज द इक्वल अगेन 50-50 बेनिफिट, बट इट वुड हैव बीन अ वेरी फन एस्पेक्ट फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव दैट द मैच वेंट थ्रू. Yeah. No, 100%. He's asked. How do you bring KL Rahul back in this team? There is a route, if you want me to tell you. If Shreyas Iyer continues to get off the short ball, he goes out, so Rahul comes in. That's how he's going to come back into the team. But he's not going to come back as a wicket keeper though right now. I don't think that is possible because उन्हें fully fit नहीं है. First of all, पता नहीं पुणे 100 ओवर कीपिंग कर सकता नहीं कर सकता. भाई like एकदम से अगर वहाँ फिर से इंजर हो गया कीपिंग करते हुए, वो रिस्क नहीं ले सकते आप. तो मेरे हिसाब से ईशान किशन cements his place now. If there is a route, there is another route. If Shreyas Iyer keeps getting out like that, then KL Rahul comes in there. We're not suggesting that. I'm just saying that is if he's asking a question, so I'm suggesting a possible route. That's it. There's another route also. If Shubman Gill continues to fail, Ishan Kishan goes top the order and Shubman Gill goes out and he comes in. So वैसा भी रह सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है ये टीम में. Because KL Rahul can bat number 5 also. If he wants, he can even be an opener. He has multiple accesses to this team. But that will be where सतीश भाई का क्वेश्चन आता है कि भाई स्काई को खिलाना था सब, पर भाई वैसा तो होते जाएगा इंडियन टीम में. कोई किसी को तो बुरा लगेगा ही. Someone or the other will be felt left out, which according to Rohit Sharma is being communicated to the players. अब नहीं पता है वो कैसी communication होता है, how hard those conversations are. But अभी के हिसाब से तो it looks like this team is more or less set at this point of time. Now it's the only question is Shardul Thakur. Will he be cemented? Will he be changed? वो देखना पड़ेगा with time. Also 3 runs to Shami bhi maar deta. I have always said if you want batting at 8, Shardul is not the choice. I think Shardul is only the choice because of the performances and like IPL में भी 64 मारा था and he's okay, he can bat I would say, but he's not a dependable proper batsman. Maybe Aksar is a bit better batsman than him in that aspect of the sport. Yeah, मगर वही है कि अब you expect more from Shardul Thakur. We've seen him score runs. He has a 60 in Australia. In the IPL also he scored. You expect more from him. But I also agree with Chirag bhai. You can't just play him because you need runs from him. You have to play him because he has to provide something with the ball. Agar he's going 100 runs in 100 runs in 10 overs or something like that, then you have to drop him. Somebody comes in.
Yeah, 100. I'm going to look at him from a bowling point of view, and then hopefully he chips in something. And of course, you're playing him as a bowling all rounder, right? So you need some runs from him too. Yeah, 100%. Everybody, I mean, देखो भाई runs जहाँ तक मिलते हैं, it's always a benefit. But again, don't make it a reason to compile your team. Compilation का एक जरिया आपको बना दो कि भाई नीचे बैटिंग होना ही है, तो हम ऊपर को भी हम थोड़ा चॉप एंड चेंज कर देंगे just to make sure everybody fits the bill. So I don't think that should happen. जितने 6-7 बिल्कुल. बैट्समैन स्ट्रांग रखो, नहीं हुआ you miss out on, you will not be able to fit everything in one go. It's not possible. कहीं ना कहीं तो आप चूकोगे ही. तो आइदर आप इसमें करो या उसमें करो ना. अगेन यू हैव टू आल्सो थिंक फ्रॉम हु इज अ बेटर फील्डर, हु समटाइम्स यू शुड आल्सो थिंक लाइक दोस एस्पेक्ट्स, राइट? बेटर फील्डर कौन है, ये कौन है, वो कौन है. सो मे बी इन दैट एस्पेक्ट आल्सो यू नीड टू टेक अ कॉल. सुदीप भाई सर, बट अगर मैच पूरा होता तो बुमराह, सिराज एंड कुलदीप मार देते पाक को. बस वह कुलदीप भाई की बात करो, व्हाट्स द पिच शूटिंग हिम. आई मीन ही कैन गेट इट टू टर्न, बट देयर वाज नॉट मच टर्न ऑन ऑफर. आज वी सॉ विद शादाब. Yeah, I mean, Shadab and Nawaz didn't get too much turn. Lekin, as the match progresses, you expect the surface to be a bit slower and drier, so maybe he could have got purchase. But that's if and coulds. I cannot tell you confirmed कि क्या होने वाला था. But I was thinking कि अगर बारिश नहीं पड़ी and we had a full game, then Kuldeep Bhai would have definitely had a say in the second innings. But yes, if they started after that rain thing, then maybe potentially it would have been difficult too. Yeah, grip the ball and stuff like that would have been issue. But Yeah. Ishan Kishan came out of syllabus. He will be part of the World Cup show now. Expect from Gillen Ayer. I mean, see that out of syllabus is okay. Still, I would still take this out of syllabus because this out of syllabus has been playing against Sri Lanka and New Zealand. He played a lot of the games, this year. Rather than someone who had been injured and sidelined and then he's just coming direct in, right? And again, performances wise, Ishan Kishan has proven it in West Indies. Sanju Samson again injury के बाद he came directly into West Indies. So again, wicketkeeper biasm के लिए हिसाब से he's lucky Ishan Kishan is there. Rishabh Pant would have walked in if he was not having that drastic injury. So I mean, Yeah. as a wicketkeeper, Guys, you are I'll just having. try to join you. Yeah, I think they're closing. I've just tried to join you. I'll try to walk a bit out and find a place. Okay. I'll just, okay. So I think from the wicket keeping aspect, अगर मैं देख रहा हूँ, you'll always be one who is coming out of the syllabus and आपको वो luxury है because obviously with the lack of. आप ये देख लो भाई, they've made KL Rahul a wicket keeper. KL Rahul wasn't a wicket keeper, he became a wicket keeper so that he can get a spot in the middle. So वो हिसाब से again utility player बनाने के लिए कुछ भी नाम दे देंगे, but obviously a wicket keeper India में at this point of time you can't cement anyone. If Ishan Kishan gets a bad run of games, KL Rahul will come back. KL Rahul gets a bad run again. Maybe you see Sanju subject to his injuries and stuff like that. तो आप कभी नहीं बोल सकते. Please KL Rahul को बाहर ही रखो टीम से. हाँ भाई, everybody wants that. But again, ये प्रॉब्लम इंडिया में है कि भाई तजुर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मोस्ट डिसीजंस आर मेड. ईशान किशन यस अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है. ही इज गॉट अ गुड 82 टुडे अगेंस्ट अ वेरी ब्रिलियंट पाकिस्तान साइड व्हिच विल ओनली इंक्रीज उसका कॉन्फिडेंस, व्हिच इज गुड टू सी ऑब्वियसली. But again, 2-3 strings of bad games, bad decisions, maybe even bad keeping will push him away from this Indian squad. तो अभी आपको पता नहीं केएल राहुल की वापसी कब होगी. बोला गया था कि सेकंड हाफ में खेलेंगे, पर अच्छा ही ईशान किशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं अभी, तो दिस गिव्स टाइम केएल राहुल को थोड़ा वो रिकवरी के लिए, which as a player it's good always to have more time to recover and recuperate in the NCA. And I don't think he should travel to Sri Lanka as well. It's better that he stays in the NCA right now because जिस तरीके से ईशान किशन जा रहे हैं, संजू को भी चांस मिल जाएगा. So it's better that way rather than KL coming, getting used to the condition, getting used to his injury and stuff like that. हाँ भाई, बैटिंग है, मूविंग कंडीशन से आप केएल भी डर के खेलेगा, सैम के खेलेगा. वेरा ईशान किशन को आप देखो, फियर्स थॉट प्रोसेस से गया. अब एक चैलेंज प्रूव करने के लिए गया, which was more fun to see. अब शुभमन गिल को आप देख लो, थोड़ा बहुत सहमे हुए थे. सेम थिंग वी कैन नॉट हैव इन द मिडल ऑर्डर व्हाट वी आर हैविंग इन द टॉप ऑर्डर, दीस इश्यूज. एंड दैट्स व्हेयर आई एम बैकिंग ईशान किशन, दैट ही इज अ बिट मोर confident going into this game and going into how he played Pakistan. And Hardik Pandya की बात करेंगे. I think again Hardik Pandya को बहुत criticism मिला है over the time, but against Pakistan personally उनका record बहुत ही अच्छा रहा है. I think he's been done decently. Again consistency issue है, उनको consistent अगर रहे हार्दिक पांड्या और ये situations में जैसे आके खेले, aggressive जब होना है वो टाइम पे भी aggressive हो. But I think it's a good start. Everything बोलते ना, a fresh शुरुआत, नई start ली है. ईशान किशन good, हार्दिक पांड्या गुड. अब यहाँ से देखते हैं कि किधर जाती है ये टीम. इंडिया और अगेन नेपाल के अगेंस्ट मैच है. कल तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच है. उसके बाद इट विल बी आई थिंक इंडिया नेपाल होगा 4 सितंबर को, यानी कि मंडे को. एंड उसमें विन सिचुएशन ही है. ऑब्वियसली आप नेपाल को भी लाइट नहीं ले सकते. तो आई थिंक वो हिसाब से लेट्स जस्ट टेक दिस एज अ न्यू स्टार्ट एंड सी वेयर दिस टीम इंडिया गोज.
rather than keep arguing कि भाई इसको लाओ उसको मत लाओ. अब जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे उसके ऐसे मालूम होगा कि भाई क्या डिसीजन है ड्राविड की, क्या डिसीजन है रोहित शर्मा की टीम को लेके. दीपक चाहर इज बेटर देन शार्दुल टू बी ऑनेस्ट. He can bat with the ball. At least he has power play as his strength. With Shardul, he has no strength in bowling. From his lucky 2 wickets in an over. Yeah, I mean, Deepak Chahar को कहना injury prone है थोड़ा, पिट भी सकता है. He has a tendency to get smashed. He will probably get the wicket. He gets the ball to move as well. I do agree with that. But again, Deepak Chahar has also been out from the team for quite some time. वैसे तो देखो बॉस, अगेन दीपक चाहर भी पिट सकता है यार बॉलिंग में. मेरे को तो जहाँ तक दिखा आईपीएल में भी क्वाइट पिटा. इंजरी से आगे अच्छा ही डाला इन द इनिशियल स्टेज, बट अगेन मिडिल ओवर डेथ ओवर कुछ ज्यादा है नहीं उसके पास. इंजरी प्रॉब्लम भी है राइट फर्स्ट. इंजरी प्रॉब्लम ही बोल रहा था. तो ऐसा सिचुएशन है दीपक चाहर का. बट अभी क्या सिचुएशन है मुझसे वाले, अभी ग्राउंड बंद हो जाता, क्या है आपका, क्या है जाने का सीन? गाड़ियां मैं अभी टुक टुक लेना है मेरे को. नहीं अभी तो बस वो क्या बोलते सो बाज टीवी वाले एंड प्रोडक्शन वाले निकल रहे हैं एंड रैप अप. we're the first people to enter and last people to leave at work buddy. That's how it is every single time. But it's empty now. ये पूरा जो अगर आप देख रहे हैं पूरा ये जो रोड था पूरा फुल था मैं जब शुरू करा स्ट्रीम आपके साथ, और अब पूरा खाली हो गया. There's a few people still left. They're letting me stay until I think those people are cleared up. वो जो आई थिंक ग्राउंड में जो काम करते हैं स्टफ. बट आपके पूरे एंकर्स जो थे वसीम अकरम, रवि शास्त्री, इरफान पठान सब निकल गए लाइक आधा एक घंटा पहले. दे लेफ्ट फ्रॉम देयर ओनली. So in the media center, you have the second floor is all the commentators, everything. Then the third floor is us. So it's like that. It's a nice setup. तो सीन ये है कि टुक टुक लेके वो जाना. I just actually while I was finding a spot I met another journalist and he was saying that because there's no press conference today there might be a press conference tomorrow, so he will let me know. तो अच्छा information भी मिल गया वो ब्रेक में. तो कल मालूम होगा अगर press conference है. Then I don't know टीम का announcement का press conference है या नेपाल मैच वाला है. I don't know. तो we'll keep stay tuned to chasing the target. कुछ ना कुछ रहेगा. But yeah, I hope you're enjoying the coverage. कोशिश कर रहे हैं हम लोग सब वो करके. And आज तो like crazy match होने वाला था. Unfortunately result नहीं हुआ. But this is it's part of life. You can't do anything about it. Again क्या है मालूम, this is just going to add to the next match. Energy और बढ़ेगी next yeah, match 100%. तो आप ये बोलते ना आधा अधूरा काम हो गया उसको पूरा करने के लिए, तो वो हिसाब से देखो आप. Like look at it like you have to finish the job in the next game, hopefully in a more crucial stage of this Asia Cup. But again, like I said, it's a good battleground also जहाँ पे लोग का मालूमात हो रहा कौन कितने पानी में है. बुमराह कितने पानी में अभी तक मालूम नहीं हो रहा. उन्हें तो बहुत यार आयरलैंड में सिर्फ 4 ओवर डाले बात है, कहीं बेचारे को मौका ही नहीं मिल रहा डालने को. और मैं सुना आयरलैंड में कोई बोल रहा था कि उसका रन अप थोड़ा और शॉर्ट हो गया. तो मेरे को वो देखना है. आई डोंट नो. मैं वेट कर रहा था पूरा टाइम उसका रन अप देखने के लिए, मगर वो मौका आया नहीं. एंड द सैड पार्ट वाज उन लोग वार्म अप करने आए राइट. मैं बोला चलो मैच शुरू हो रहा, मैं वॉशरूम ये वो कर लेके कॉफी तैयार कर लिया सब एकदम से. देन आई केम सब बहुत चादर उड़ा दिए. तो इट वाज सो क्लोज टू सीइंग some action, but unfortunately we didn't see that. But ऐसा हो गया नहीं स्कूल क्रिकेट में बैटिंग करके घर चले जाओ वैसे हो गया. My brother used to make me bowl all day and then we would go back upstairs. He wouldn't bowl to me that much. So वैसा situation हो गया. I mean वही है यार. I think Pakistan must be annoyed with the bowling. खाली bowling करके चले गए, बैटिंग करने नहीं मिला. But again, we got to see, like I said, positives. Ishan Kishan, Hardik Pandya in a pressure situation coming and making a game out of what was supposed to be probably a 150 or less ka total. And also we got to see great quality Pakistani bowling. We know now what we have to look forward to in the World Cup as well. In the next stage of the Asia Cup, मालूम होगा कि भाई क्या we can expect from Shaheen Shah, Naseem Shah, Haris Rauf. They're roaring to go. Like इन लोग में जो भूख दिख रही पाकिस्तान के बॉलरों में भाई नेक्स्ट लेवल है. तो कर रहा था ओटीपी दे रहा. बिल्कुल. और फर्स्ट एक चीज में मेरे को ख्याल आया अहमदाबाद में तो और परचेस मिल सकता है फास्ट बॉलर्स को. सो वॉच आउट. आई नो इट विल बी वहां शामी भाई डालेंगे बिकॉज़ शामी भाई का होम ग्राउंड है वो. हाँ मगर आई मीन दीस गाइज विल आल्सो एंजॉय बॉलिंग देयर टू. देन if Shami enjoys it they'll also enjoy it, right? So वही है कि if it's a full proper batting track then we don't know. लेकिन I think under lights all the movement तो रहेगा. बट यहाँ पे एक अच्छी चीज है like ड्यू व्यू का फैक्टर ही नहीं है. तो टॉस goes out of the window like in that sense. And yeah, the only question that I had with the decision of the toss was that with rain around, why did he bat first? I would have batted for 100%. I think the pitches are getting slower. It's becoming difficult in the second innings. And a pressure situation, you want to
thing. But yeah, with rain around, it was a bit of a I risk think you know. call I from Rohit think Sharma. with what I can understand है भाई जो first second match में जो अपन देखे श्रीलंका बांग्लादेश में बारिश होते हुए भी continuity हुई मैच में and you know वैसे हिसाब से अगर आप देखो you know I think he just said कि भाई maybe match continue होगा you never know with this Palakale kind of ground and it's a gamble either way I think वो हिसाब से अगर आप toss करके you know बैटिंग सेकंड भी करो या फर्स्ट करो आइदर वे यू डोंट नो किस तरफ वेदर जा रहा है सो इट इज या जस्ट अ अब उन्हें जैसा WTC में ओवरकास्ट था, बॉलिंग कर लिया था उन्हें, मगर वो फिर तो भी पिट गए भाई हम लोग। वो तो फिर खैर भी पिट गए, तो इसलिए मैं उतना टॉस पे तवज्जो नहीं देता हूँ। आई इट्स ओके, व्हाटएवर द सिचुएशन, व्हाटएवर द डिसीजन इज, यू बैक इट एंड यू बैक योर प्लेयर्स टू डू इट एंड लेकिन वी ऑलवेज गोइंग टू टॉक ये प्लेयर रहना था, वो प्लेयर नहीं रहना था। जो आज 11 उतरी, दैट आई एक्सपेक्ट टू विन विद दैट टीम, राइट? लाइक यू स्टिल एक्सपेक्ट बोथ टीम्स, लाइक यू एक्सपेक्ट टू विन विद दोस काइंड ऑफ टीम्स, इट्स जस्ट हु परफॉर्म्स ऑन दैट डे एंड yeah, unfortunately result to nahi aaya, but overall it was a good experience, a lot of crowd coming in, and now we all get to Nepal. That game is what in मंडे just मंडे 1 day मंडे break, yeah, Monday. So मंडे को है so basically it's the Monday game. It will be in Palakkale, same ground over here, and then we move to Colombo for the second leg. That will be where the Super केएल राहुल Fours and कम the बैक finals will happen. वे केएल राहुल And से उन्हें कंप्लीट उन्हें कहा है कि अभी तक तो पहुंचा नहीं है, आई डोंट एनसीए नो, में यहाँ पे तो है नहीं उन्हें। एनसीए में है नहीं तो अभी एज ऑफ नाउ ही हाँ, तो बैंगलोर एनसीए में। ही विल गोइंग टू कम टू द सेकंड हाफ ऑफ द एशिया कप व्हाट वाज told to us in the press conference अब वो नहीं मालूम कि if Ishan hits another 50 hopefully then I don't see him coming back Yeah, he's not going to come in Ishan Kishan's position. If he comes in, सही है he'll सही come है in a different position. But we'll have to see what it is. But if he's, I think they were more desperate because they thought Ishan Kishan is not going to perform this and that. But now I think this will give them a lot of confidence, and they can slow down his recovery too. Like उन्हें आराम से आ सकता है because उन्हें भाई fit ही नहीं That's था, what आप I was saying. उसको हाँ जब डाल दिए वही थे बोला था squad it's में। good to have a recovery time for a player. Any player would be more confident having more recovery under himself and ट्रीटमेंट बराबर हो गई सेट हो गया पाँव तो उसके बाद टूटे हुए पाँव पे ऑलरेडी और डैमेज करना डजंट मेक सेंस एंड एशिया कप की हाँ पिक्चर जी, वर्ल्ड कप इज द बिगर पिक्चर आई गेस World Cup is the bigger picture. Of course, you सवाल want rhythm going into the World Cup. या बट सवाल ये है कि अब जैसे जी, शाहीन के सामने इनके सामने जब आएगा मार्क वुड जब आएगा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जब आएंगे क्वालिटी अब देखो भाई अभी तो नेपाल से खेल ले रहे हैं आप बांग्लादेश आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस इवन ऑन डे अफगानिस्तान एंड दीस गाइस कैन हिट यू बट देन द बिग गन्स विल कम इन द वर्ल्ड कप अब क्या करेंगे अगर ऐसा ऐसा आउट हो रहे मूविंग बॉल पे सब देख रहे भाई अभी आपको सब देख रहे मूविंग बॉल और इनसाइड एजेस एंड अ लिटिल बिट विथ क्या होने वाला है बॉस लाइक इट्स जस्ट गेटिंग मोर एंग्शियस फॉर द वर्ल्ड कप वेयर द बेटर टीम बिगर टीम्स कम इनटू द पिक्चर they're looking at India obviously that's like one of their biggest oppositions so they're getting their yeah. notebook out and sort of jotting things down Yeah, for India, I think the first goal has to be reaching the final over here and then winning that final. Take it step by step. Don't look into the World Cup right now because last time the mistake that they did was they kept saying this is just a tournament to prepare for the World Cup, to prepare for the World Cup. It was said clearly by the team management, by the captain, everything. This time around, I think they have to take this as a serious tournament, try to win it because फिर result आ जाएंगे. If you're focused on it, at least you will, get to the final. I think if you're just focused on match by match, if you start experimenting, thinking भाई नहीं World Cup के लिए हम लोग rhythm लेके आ रहे फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है because that's what I felt happened last year. This time yes around they were pumped. I saw the players today before the game as well. They were pumped, like they wanted to win the game today. They were excited, of course, and ready to go. So I met a few people as well, like who were interacting with the players, and they also said like both sets of players were looking to win. Of course, there's camaraderie, but they're looking to win and they're pumped up, and that's what you want. You want healthy competition in this tournament. फिर आगे जाके that's the best preparation for the World Cup if you're going to play competitive here. yeah 100% I think why don't look at the World Cup just look at this maybe if you want to look at it as a individual way to No, you perform can look at it, but yeah, as a player, you shouldn't be looking that far yeah as a team. Me and you can look at the World Cup. We can start talking about tickets, No, this, that, whatever. I'm saying as a player, if you want to improve your performance, get the rhythm like you Yeah, said, which good that way also to take it, but take it as every match comes and goes rather than looking at the final Ahmedabad and that tension. अगर मैं यहीं नहीं खेल रहा हूँ तो वहाँ कैसा खेलूंगा ये सब मत को देखो. Rather खाली अभी एक के बिल्कुल. बाद एक मैच को देखो and don't look at your competition also. Don't look at KL Rahul, don't look at Shreyas Iyer. Just whatever time you get, make most of it and then just leave it on your efforts and then he'll talk. वो सही है. And that's where Kuldeep Yadav is बिल्कुल. also a prime example, right? He was out of the team, then he just kept performing consistently, and he came back into the बिल्कुल. team, and now he's irreplaceable. So that is what makes us up an asset, and
go about it. I think we'll let you go, Mustafa. I think we need to find a tuk-tuk in the midst of a tip-tip Yeah, barsa pani these ka are all type the situation. tuk-tuks over here. Yeah, so we'll let you leave, and I'll just wrap it up, and I'll see you tomorrow. Hopefully, if there is any press Okay, sir. conference, you let us know. Share the content. Thank you everybody for I, joining us tonight. I'll see you thank you, sir. later, buddy. Okay, chalo. Okay, okay, thank So yes, that was Mustafa live from Palakkale. He was enjoying the game, but पूरा game हुआ नहीं unfortunately. Uh, पाकिस्तान बची या इंडिया बची, we would only have to say क्या पता कौन बचा, but I would say still अगर पॉजिटिव व्यू से लेने का है, इंडिया को एक पॉइंट मिल गया, पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया, पाकिस्तान क्वालिफाई हो गया नेक्स्ट राउंड को. इंडिया हैज टू प्ले नेपाल ऑन द 4th of सितंबर एट द मंडे मैच. कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर अगर ये मैच के लिए है या कल के वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए है. हम उसको भी कवर करेंगे. होपफुली मुस्तफा वहीं रहेंगे, तो उसका भी हम आपको अपडेट देते जाएंगे. हमारे साथ जुड़ते रहिए. चेसिंग द टारगेट पे काफ़ी गेस्ट लाने की कोशिश होंगी, वर्ल्ड कप के टाइम पे भी, एशिया कप के टाइम पे भी. एंड या आई मीन चलिए, अब जो जितना भी मैच देखा खुशी में देख लिया. इंडिया पाकिस्तान काफ़ी टाइम के बाद 50 ओवर फॉर्मेट में देखने को मिला. इट वॉज गुड टिल इट लास्टेड. could have been better if it ended, but you can't get everything. बारिश भी एक चीज़ है, बारिश का भी an unfortunate scene हो गया. And yeah, I mean batting wise top three मेरे लिए still have to step up. They still have to step up their game. I'm still not convinced with our top three. Again टेल के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है कि टेल भी कहीं क्रम्बल हो गया. थोड़ा बहुत मेरे को हेजिटेशन जडेजा इन लोगों से दिख रहा है. अब जो वहाँ पे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या कॉन्फिडेंस प्रूव कर रही है, जिस दिन अगर वो लोग टूट गए तो क्या होगा? हु विल टेक द चार्ज? दैट इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन. बॉलिंग के हिसाब से तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज ये ट्रियो अभी तक डाली नहीं है. सॉरी, सिराज एंड बुमराह अभी तक डाले नहीं है, बट यस सिराज नंबर 1 बॉलर है. बुमराह भी अपने टाइम पे नंबर 1 थे. इंजरी से वापस आ रहे, अभी भी पता नहीं कि उनके साथ उनकी बैक कितनी हील हुई है. एंड या क्या कॉम्पोजिशन खिलाती है इंडिया, क्या थॉट प्रोसेस है वर्ल्ड कप के लिए आज दे. एंड कल अगर स्क्वाड अनाउंस होता है तो उससे भी काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी कि भाई किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं. क्योंकि ईशान किशन अगर अच्छा खेल रहा है, यानी फिर संजू भी बेचारा रिजर्व में बैठा है, जहाँ पे आप तिलक को लेके आ गए उसके ऊपर. तो यस काफ़ी मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अभी जो 11 आज खेली है, इंडिया शुड स्टिक विद दैट फॉर द प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द एशिया कप, इफ नॉट पूरा. एंड यस श्रेयस अय्यर हैज टू स्टेप अप. आई नो इंजरी से वापस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे सकते हैं, बट शुभमन गिल फॉर मी इज अगेन अंडर द रेडार. रोहित शर्मा, विराट कोहली, Hardik Pandya yesterday was good, but he will have to have consistency. Same with the likes of Ishan Kishan, जो वेस्ट इंडीज से तो कंसिस्टेंट हुए हैं, बट अगेन गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप और कॉन्फिडेंट और भरोसा आना कि हाँ भाई ये लोग हमें लेके जा सकते हैं, ये कैरी कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में. एंड देन टेल के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेस कम करना पड़ेगा उन लोगों पे. बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आई थिंक हो गई है इन लोगों पे इन द रिसेंट टाइम्स. तो पता होगा. अब नेक्स्ट कल के बारे में हमसे जुड़िए. कल बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मैच टू लुक फॉरवर्ड टू. नजमल शंटो रहेंगे, राशिद खान रहेंगे, ब्रिंग जरदान रहेंगे. लिटिन दास आई थिंक बीमारी है, वायरल की वजह से लिटिन दास ड्रॉप आउट हो चुके हैं बांग्लादेश के स्क्वाड से. तो यार बी गुड टू सी शाकिब अल हसन अगेन. फर्स्ट मैच में काफ़ी अच्छी प्रदर्शन थी, बट अगेन बैटिंग में चूक गया. आई थिंक बांग्लादेश नीड टू फोकस ऑन द बैटिंग. टॉप ऑर्डर पर्टिकुलरली नीड टू गेट द रन्स. तो है तंजीम है, काफ़ी अच्छी बांग्लादेशी स्क्वाड है, बट दे जस्ट नीड टू बी एबल टू गेट अ 250-60. बॉलिंग बहुत सॉलिड है बांग्लादेश की. सेम विद अफगानिस्तान, बॉलिंग सॉलिड है, बैटिंग है. तो दोनों टीम की अगर आप देखो बैटिंग थोड़ी बहुत इफ़ी है, बट अगर बॉलिंग देखें तो दोनों में लेग स्पिन अच्छी है, और मेहदी हसन मिजाज की भी स्पिन अच्छी है. वहाँ पे राशिद खान हैं, मोहम्मद नबी हैं, यहाँ पे फजल फारूकी भी हैं, एंड यहाँ पे ये तस्कीन अहमद अगेन वेरी गुड फास्ट बॉलर. तो बैटल ऑन पेपर लेवल दिख रहा है. मे बी बांग्लादेश का पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है, बट अगेन बैटिंग नीड्स टू बी गुड फॉर बोथ ऑन दैट डे. विद दैट यस, हम लोग कल ज्वाइन करेंगे आपके साथ इंटरव्यू. अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस होता है इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, तो हम उसे भी आपके सामने लेके आएंगे. मुस्तफा वही हैं पालकले में, उनके साथ जुड़ेंगे हम लोग. एंड ट्विटर इंस्टाग्राम देखते रहिए, हम लोग अपडेट्स ग्राउंड से देते रह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से देते रह रहे हैं, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट. ट्विटर का है चेसिंग द टारगेट, इंस्टाग्राम का भी चेसिंग द टारगेट है. लोगो आपको दिख जाएगा हमारे यहाँ पे, यूट्यूब पे भी वही लोगो है, इंस्टाग्राम पे भी वही लोगो है. डू मेक श्योर दैट आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस. कल मुलाकात करते हैं विद मोर क्रिकेट टॉक, विद मोर क्रिकेट बैंटर. टिल देन चेस टारगेट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग.